फ्रेंड्स ये एक वोल्वो आई थी हमारे पास। इसका ये सारे कोड आ रहे थे मोबिलाइज़र के और ब्रेक फेलियर, स्टॉप सेफ्टी, एयर ब्रेक के, ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम के सारे। ब्रेक फेलियर, स्टॉप सेफ्टी, शिफ्ट टू पी, चार्जिंग फेलियर सर्जेंट, SRS एयरबैग, coolant system service, blind spot system reduced function, park assist system service required. No communication. VCI on the car is connected. No communication with engine control module. No communication with transmission control module. Nothing. Each fuse is I remove out and checked twice. The relays are okay. I checked outside, it's working fine. No corrosion in the wiring. I checked for all the system. I replace the key battery, but it's the same. Pressing brake, move it down, but it's doing the same. The gear we cannot shift. The gear switch I check, it's okay. स्कैनर भी कनेक्ट नहीं होगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने इसकी सारी वायरिंग चेक की है। ये इसके फ्यूज बॉक्स वगैरह खोल के सारा फ्यूजेस, वायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसकी चेक की है। ये सारी वायरिंग इसकी नई बनाई है। से 2012 मॉडल है। सो वायरिंग जो थी काफ़ी इसकी डैमेज हो गई हुई थी, बट मेरा वायरिंग सही करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। सारी मैंने इसकी वायरिंग खोली हुई है। इसमें PDM का भी खोला हुआ था सारी वायरिंग। So guys, checking all these things, I found my problem. This car, my problem is the power steering control module. It's in the right front inside the bumper. So when I remove these grips of power steering control module, so it's working fine. Let me show you guys. Let me remove the grips. It's inside. Wear our gloves. Safety first.
Let me remove and show you the grips. This is the main power grip of the power steering control module, and there is another grip right over there. This is the second grip, coming with 3 wires, red and white, green and black, blue and black. So after removing these grips, let me show you guys. Now you can see with first push my switch is on. See guys, some of the notifications are there, but it will be in the history. And now after pressing the brake, I can move my shifter, and with scanner control unit, central electric module. See guys, I can access these things. My engine control module, so the problem is, in this case, is in my car is in the steering control module. So